2500 years ago, in Pali language, another message appeared in the pure soul of Buddha. Buddha was born in Nepal, in Lumbini, and where he got this message, he was a pure soul. He wanted to know the truth about this world and the realities of this world. So he sat on a meditation, and ultimately, after many years of meditation, he got the message from the kingdom of God, from unknown source, and that source revealed the words of Tripitaka. There are many teachings, hundreds and thousands of teachings, but the main teaching is Samyak Gyan, that is all are equal in the sight of God. Any kind of division in the name of caste, creed, color or religion is not made by God. It is all created by man. Caste system was created for a society very much different from that of today. It has lost its relevance. So this system, upper caste है, ये lower caste है, ये ब्राह्मण हैं बड़े ऊंचे हैं, ये छत्तीस से नीचे हैं, ये बनिए उसके नीचे हैं, शूद्र और भी नीचे हैं, सबसे नीचे हैं. ये व्यवस्था बुद्ध जी ने कहा कि मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है. इस पर विश्वास मत करो. परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को बराबर बनाया है. एवरीबडी इज इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड. तो ये जो जाति पाति और ये व्यवस्थाएं हैं, ये सब गलत हैं. ऑल द टीचिंग्स, बुद्धा की बहुत हजारों टीचिंग्स हैं, उसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है. इसके बाद ये पाली में आई, ट्रांसलेट हुई, दुनिया में फैल गई. 2000 years ago, another message appeared in the pure soul of Jesus Christ. And this was the message of Bible. And Jesus was born in Bethlehem, a village near Jerusalem. And his name was Joseph. He was a carpenter. And Joseph gave a birth to his son, and that is, he named him as Isa, Christ. And Christ was a pure soul. He said the kingdom of earth must belong to those who are kind and compassionate. He was himself so compassionate, while people were putting nails into his body with a thick hammer. They were killing him. He was praying, God, oh God, pardon them, those who are killing me. He was so compassionate and kind that he was praying, God, that they are not the culprits. They are ignorant. Their parents and their teachers have not taught them about God. The teachings of God have not been taught to them. So therefore they are committing a crime, but they are ignorant. They are not deliberately doing it. They are ignorant. Nobody has taught them about God. So this kind of, compassion Jesus has. So he taught us to be kind and compassionate. So this is a teaching which came in Hebrew. It was translated Hebrew. It was translated in many languages. It spread all over the world. Then again, 1400 years ago, another message appeared in the pure soul of Muhammad. And that was the message of Bhaichara, brotherhood. All are brothers and sisters, because the Quran teaches us that Khuda is Rabbul Alameen. He is the God of the whole world. He is not the Rabb of Muslimin. He is not Rabbul Muslimin. He is the Rabb of the whole world. He is the Rabb of the Alameen. Alameen means whole world. एक खुदा के बंदे हैं, दुनिया के इंसान सब भाई भाई हैं. Quran teaches us brotherhood, peace and unity. Quran never teaches anything else other than unity and peace and understanding with each other. So this is the teaching of Quran, that is a brotherhood, that is for the whole of humanity, not only for the Muslims. Unfortunately, out of ignorance, Muslims believe that this is a book sent by God to them. God will not be a God if he sent anything for a particular person or a particular class of people. God only will be God if he has sent his teachings to the entire humanity. So God has sent his teachings to the entire humanity. All these books have come for the entire humanity, not for a particular person. And then again, 550 years ago, another message appeared in the pure soul of Nanak. That was the message of Guru Granth Sahib. And here it is written, true sacrifice. Guru Granth Sahib came in Gurmukhi, Punjabi. It was translated into many languages. It spread all over the world. This teaches us sacrifice. And 200 years ago, another message appeared in Persian, that was in Iran, in the pure soul of Baha'u'llah. His picture is not available. So we put the picture of his son, Abdul Baha, who was the interpreter of the teachings of his father. He taught us unity of hearts. He taught us, oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor
and grant them strength to serve thee. O God, lead them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge, and cheer their heart by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। आज से इससे पहले भी 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण आए थे, उसके भी 2500 वर्ष पूर्व भगवान राम का आगमन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया। उन्होंने स्वयं 14 वर्ष के लिए मर्यादा के पालन के लिए, अपने पिता के वचन की मर्यादा के पालन के लिए 14 वर्ष के घोर कष्ट सहन किए वन में जाकर, और लोगों ने उनके जीवन से प्रभावित हुए। लोगों ने अपने घर बदल डाले, अपने चिंतन को बदल दिया। सब लोग बिल्कुल मर्यादित होने लगे। घर घर में मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाने लगा। घर घर के सब लोगों का जीवन मर्यादित होता चला गया। और कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर काहू न व्यापा। क्योंकि सबके जीवन जब मर्यादित हो जाएंगे तो दुख नहीं आएंगे। हम जब अमर्यादित जीवन जीते हैं तो हमें दुख आते हैं। दुख का कारण है हमारा अमर्यादित जीवन। तो जब जीवन हमारा मर्यादित होता है तो हमारा विकास होता है। तो राम के राज्य में कोई दुख नहीं थे किसी को। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर काहू न व्यापा। इसलिए कि लोगों ने अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को बदल लिया था। तो प्यारे बच्चों, राम की मर्यादा, राम अर्ध अवतार माने जाते हैं हिंदू धर्म में। कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण को एक पुस्तक रिवील हुई गीता, राम को कोई पुस्तक परमात्मा ने रिवील नहीं की। लेकिन राम एक अवतार थे क्योंकि उन्होंने दिव्य संदेश ईश्वर का सुना और उस पर अपने जीवन को लगाया और 14 वर्ष के घोर कष्ट सहन किए। इसे अर्ध अवतार मानते हैं। और कृष्ण को पूर्ण अवतार इसलिए को उन्हें पुस्तक रिवील हुई। ये सभी पूर्ण अवतार हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग और बाहुल्ला के हृदय की एकता, ये सारे गुण हमें अपनाने हैं। और ये बच्चा भी कह रहा है कि सारे गुण मुझे मिल जाएं तो मैं टोटल क्वालिटी पर्सन TQP बन जाऊंगा, और मैं टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM बन जाऊंगा, और फिर मैं डिवाइन सिविलाइजेशन इस धरती पर दैवी सभ्यता स्थापित करूंगा। ये बच्चा कह रहा है कि आई एम मटेरियल बीइंग, इसलिए मुझे मटेरियल ज्ञान दीजिए, भौतिक ज्ञान, अंग्रेजी भूगोल गणित विज्ञान का उच्च कोटि का। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, इसलिए मुझे उच्च कोटि का मानव बनाइए जिससे मैं मानव जगत की सेवा कर सकूं। आई एम ए डिवाइन बीइंग, इसलिए मुझे ईश्वर की सारी शिक्षाओं का ज्ञान कराइए ताकि ईश्वर की सभी शिक्षाओं को सीखकर मैं एक टोटल क्वालिटी पर्सन बनूं। परमात्मा ने जितनी भी क्वालिटी विभिन्न अवतारों के माध्यम से भेजी है मैं सबको जानूं। यहाँ एक और चित्र है, देखें, ये एक पावर हाउस है। पावर हाउस से बल्ब को जोड़ दिया तो ये फिर रोशनी आ गई इसमें, और ये तार टूट जाए कहीं पावर हाउस से तो फिर अंधेरा आ जाता है बल्ब में। यहाँ पर एक दिव्य लोक है परमात्मा, गॉड से, एक ही परमात्मा से सारी किताबें आई हैं। भगवद गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें, ये दिव्य लोक है। तो यहाँ पर है कनेक्टेड टू दी entire knowledge generating system of revealed words of God. A child develops the potential to be the rational. बच्चा विचारवान बन सकता है, ये सबसे पूरे दिव्य लोक से जुड़ जाए। वाइज बन सकता है, बुद्धिमान। और क्या बन सकता है? गॉडली, ईश्वरीय बन सकता है। और क्या बन सकता है? गुड, अच्छा इंसान बन सकता है। टोटल क्वालिटी पर्सन TQP बन सकता है। टोटल क्वालिटी मैनेजर बन सकता है। लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बीइंग is a blessing for human society. So he can become a good human being which is a blessing to society. और कहीं ये तार टूट जाए तब क्या होगा? ये तार टूट जाए दिव्य लोक से, खाली एक बन जाए तो क्या हो सकता है? When disconnected from the entire knowledge generating system of God's revealed words, a child can become irrational, अविचारवान. A child can become unwise, अबुद्धिमान. A child can become ungodly, अनीश्वरीय. A child can become bad, बुरा. A child can become totally misguided person. कोई misguide कर सकता है, TMP. A child can become totally misguided manager, TMM. Like an animal, a bad human being is a curse for human society. Totally unworthy and unacceptable to society. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बच्चे भौंक रहे हैं एक दूसरे पे कुत्ते की तरह, और एक कुत्ता इनका गुरु बैठा है, बार्किंग डॉग, या बार्किंग ऑन ईच अदर. प्यारे बच्चों, ये शिक्षा हमारे लिए
उचित नहीं है। जो अपराध करता है उसका कोई धर्म नहीं होता, पकड़ बांधने से कोई सिख नहीं बन जाता और रहीमतुल्लाह नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता जब तक उसका ईमान खुदा पर न हो, मुस्लिम न हो। और कोई भी आदमी हिंदू नहीं बन जाता जब तक कि गीता, रामायण और वेद जैसी कुरान की शिक्षाओं पर न चले। तो हिंदू कहने से हिंदू नहीं बनता है, मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं होता है। जो खुदा पर ईमान लाता है वो मुसलमान होता है। तो सिख वही है जो कि ईश्वर की शिक्षाओं पर चले। तो ये इतना अज्ञान है धर्म के प्रति। मेरा धर्म, तेरा धर्म, धर्म तो सब एक है। सारे अवतार एक परमात्मा से आए हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु, एक ही प्रभु है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी मोहम्मद, नीसा, नानक, बाबर, बाहुल्ला और जोराष्ट्र मोदिस के रूप में। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर को हरने के लिए एक ही परमात्मा विविध रूपों में आता है। यही बात गीता में भी कही, यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारत, मानव के मन में ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए, ईश्वर की इच्छाओं को न मनुष्य जानना चाहे न उन पर चलना चाहे, इसे कहते हैं धर्म की हानि। और रिचुअल करने लगता है, आरती करेगा, गंगा स्नान करेगा, तिलक लगाएगा, घंटा बजाएगा और सारे रिचुअल करेगा, बस न तो प्रभु की इच्छाओं को जानेगा न उन पर चलेगा। उसे कहते हैं धर्म की हानि। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब मानव के मन में ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए, न प्रभु की इच्छाओं को जानने की ललक हो न उन पर चलने की ललक हो, तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मानव के मन में धर्म की ज्योति को जगाने के लिए बार बार हम अपने आप को सृजित करते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं बार बार सृजित करूंगा, क्योंकि जो मेरी राह से भटक जाएंगे उन्हें दुख होगा और मेरी संतानें दुख में पड़े, इसलिए मैं बार बार जन्म लेकर यहाँ धरती पर आता हूँ ताकि लोग मेरी तरफ लौटें, मेरी शिक्षाओं पर चलें और वो सुखी हो जाएं। मेरी संतान केवल एक ही सुख का मार्ग है, मेरी शिक्षाओं पर चलें। तो गीता में कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, साधु प्रवृत्ति के लोगों का हम परित्राण करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म स्थापनार्थ नहीं, यदि स्थापना हो जाता तो अनेक धर्म हो जाते। तो भगवान कृष्ण ने गीता में साफ कर दिया कि धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। और हम जो बार बार आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, संस्थापित करने के लिए, नए नए नियम देने के लिए। संस्था की नियमावली होती है, तो नई नई नियमावली देने के लिए हम आते हैं। कभी हमने मर्यादा का नियम दिया, तो कभी हमने न्याय का नियम दिया, तो कभी हमने समता का दिया, तो कभी करुणा का दिया, कभी भाईचारे का दिया, कभी त्याग का दिया, कभी हृदय की एकता का दिया। तो ये युग युग में हम जो नैतिक मूल्य हैं, इनको सामाजिक मूल्य बनाकर सारे समाज में प्रचारित करते हैं। मर्यादा का मूल्य है, मर्यादा तो नैतिक मूल्य है, लेकिन राम ने इसे व्यापक तौर पर समाज में फैलाने के लिए राम रावण का युद्ध होता है। कृष्ण ने इस संदेश को फैलाने के लिए महाभारत के युद्ध की रचना की, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। तो सामाजिक नियम देने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय टू इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन। स्थापना में 2 शब्द और भगवान ने जोड़े, एक पूरा सा, एक आधा सा, एक आधा ना, और बना दिया स्थापना से संस्थापना। संस्थापना में संस्थापित करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, नए नए नियम देना। तो टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, धर्म संस्थापनार्थु संभवामि युगे युगे। हम युग युग में आते हैं। तो ये एक ही बात है। ये रिवलेशन क्या है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव रिवलेशन मीन्स रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाय गॉड progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and that their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. तो युग युग में एक ही जगह से, दिव्य लोक से ये सारा ज्ञान आता है। और ये बेसिक पर्पस of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. And तीसरी चीज क्या है कि all the revealed books of God are unerring and collected wisdom that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age.
तो ये ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, इनमें कोई त्रुटि नहीं होती। गीता है, कुरान है, बाइबल है, सारे संसार के सारे विद्वान भी मिल जाए और गीता में और कुरान में और बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहब में एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अनएरिंग है, इनमें कोई गलती नहीं है। और कलेक्टिव विजडम है, अर्थात परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तब से लेकर जिस दिन परमात्मा ने इस धरती की किसी पवित्रतम आत्मा में अपना ज्ञान दिया, वो ज्ञान कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज है। जब से सृष्टि बनी तब से अब तक की कलेक्टिव विजडम है। उसमें जो विजडम होती है, बुद्धिमत्ता, वो कलेक्टिव विजडम होती है। तो ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टिव विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलोडीज ऑफ द एज। प्यारे बच्चों, तमाम लड़ाइयाँ, धार्मिक लड़ाइयाँ युगों युगों से हो रही हैं, केवल अंधकार के कारण हो रही है, केवल अज्ञान के कारण हो रही है और किसी को कोई लाभ नहीं होता। प्रथम महायुद्ध हुआ, किसको लाभ हुआ? सेकंड महायुद्ध हुआ, किसको लाभ हुआ? इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाई हुई, हमको क्या लाभ मिला? पाकिस्तान को क्या लाभ मिला? किसी भी युद्ध में 2 बच्चे लड़ते हैं, उनको किस किस को क्या क्या लाभ हो जाता है? किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच्चे के 3 क्लासरूम है। क्लासरूम नंबर 1 इन द होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। पहला सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट हमारा घर है। तो घर में दिव्य प्रकाश ईश्वर का भी हो, सब अवतारों के आशीर्वाद हो घर पर, और सारी किताबें हो। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल के प्रार्थना करते हैं, मिलजुल के प्रगति करते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। और होम में माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी हैं, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। घर में गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब किताबें हैं। ऐसा घर होना चाहिए। और स्कूल में भी एक ईश्वर का प्रकाश हो, सारे धर्मों का आदर सिखाया जाए। और स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। गांधी जी ने कहा था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मस्ट बी टॉट कंपल्सरीली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी मेड लॉ अबाइडिंग, ऑर्डरली एंड जस्ट इन इट्स फॉर्मेटिव एज। घर में मम्मी पापा के बनाए नियम और स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल के बनाए नियमों का पालन आप करें, ताकि जब बड़े होंगे और लॉ ऑफ द लैंड जो समाज में जाएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड को माने। और गांधी जी ने कहा था, वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी आर टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। बच्चों से इसकी शुरुआत करनी होगी यदि हमें दुनिया में शांति लानी है, क्योंकि बच्चों के मन पवित्र होते हैं। उनके मन में ये बात आ जाए कि हमें विश्व की एकता करनी है, विश्व में शांति करनी है, तो वो ले आएंगे। और नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जो शिक्षा आप पा रहे हैं वो इतनी बड़ी पावरफुल वेपन है आपके पास कि यू कैन चेंज द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। विक्टर ह्यूगो महान दार्शनिक हुए संसार के। उन्होंने कहा, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। बैलेंस्ड एजुकेशन of all the 3 realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come. तो संतुलित शिक्षा का समय आ चुका है। बैलेंस्ड एजुकेशन of all the 3 realities of life, material, human and divine। प्यारे बच्चों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education.
a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. City Montessori School has set up a peace table in Lucknow in the form of International Conference of Chief Justices of the World, making a global impact by bringing together 888 eminent participants who are heads of states, chief justices, and judges from 121 countries since the last 16 years when the first conference was held. Education for protection and security builds mutual trust. Children need the reassurance that their school, their elders, and their government are making efforts. Global issues require global consensus and concerted actions by all countries of the world. One of the major challenges that confront the world is international terrorism. This is when the children's attention turned to the world's judiciary as the last hope for humanity's future. City Montessori School called for the first meeting of the world's Chief Justices in May 2001. That same year, a second meeting was convened in December 2001. CMS has held a Conference of Chief Justices of the World, also called the World Judiciary Summits, every year since then. The Chief Justices and Justices have supported and endorsed Article 51 of the Constitution of India and acknowledged it as an answer to the safety and well-being of the world's children and to create a peaceful world for them. Peace for all, and especially for our children and the coming generation. Such a conference would have been hard to pull off by many governments, let alone a school based in Lucknow, India. Yet, they did it, and the results are impressive. No less than 888 Chief Justices, judges, and heads of state from 121 countries have participated in the international conferences of Chief Justices of the world precisely because they endorse the Children's Appeal. Every year, the appeal has been far more effective than the previous efforts. Children did not give up on their original vision, however, and they have been impressing upon the Government of India and its leadership to call a meeting of the world's leaders and heads to India to discuss plausible models of global governance that may be acceptable to all or a vast majority of countries, a global governance capable of dealing effectively with issues that transcend national boundaries. I believe that this conference will definitely play its positive role in promoting peace and harmony in the world.
danas se pred licem čitavog svijeta održava jedna seoba naroda. To nije više. I want to say that I feel very concerned and I really support the topic that is being given, or the theme that is being given to this conference, uniting the world for children through enforceable world law and effective global governance. The world's judiciary is seen as an unbiased body that can help safeguard the future of the world's children. Sixty countries are participating in this conference. Over 200 chief justices and judges are participating. The world needs good people to rise against injustice and to build peace. At the outset, I would say that neglect of the social, economic and cultural heritage is rise of various conflicts including the international terrorism. Intergenerational responsibility of this generation to provide to the coming generation a safe future. Many heads of state and peace promoters have participated in this international conference of chief justices of the world, with whom CMS students have interacted at the CMS World Unity Convention Center auditorium to find solutions for a united, better, peaceful and humane world order. I am certain that participation of you all here will send out a positive message to all the leaders of the world and will motivate them to come together on a common platform and work towards the common goal of world unity and world peace to ensure a safe future of our children and the generations to come. I would like to express my appreciation to students of CMS, and I am so impressive with students of those schools whom have become a source of inspiration for us. This 16th International Conference of Chief Justices of the World is a continuation of a vision that has been developed by Mr. Jagdish Gandhi. I have come here many times. I have passion. I have passion for what Dr. Gandhi is doing at CMS. All of you gathered here as Chief Justices have an awesome and very special responsibility to safeguard freedom, democracy and decency in our world. You are the watchdogs, the guardians of the rule of law in your countries and in the world, without which democratic institutions cannot function properly. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।